समृद्धि आसी गले कारण कहने शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर समृद्धि का नाम लिया समृद्धि हाजिर तमरे कौन पढ़ा होतिला प्रोसीजर ऑफ इंडक्शन रो फास्ट सॉरी इतला फास्ट कोन थिला प्रोसीजर ऑफ इंडक्शन केते प्रकार थिला कोन कोन हाइपोथेसिस फ्रेमिंग रिलेवेंट हाइपोथेसिस वेरिफिकेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट रे प्रोपाउंडर के थिले कोन कोन बेकन बेकन जहाँ कॉल करेगा प्रोसीजर ऑफ इंडक्शन केतेटा थिला चारिटा कोन कोन ना ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट फ्रेमिंग ए रिलेवेंट हाइपोथेसिस वेरिफिकेशन सॉरी जनरलाइजेशन वेरिफिकेशन पहला ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट के थिले बेकन ठीक कहूछ तापरे को फ्रेमिंग रिलेवेंट हाइपोथेसिस रे जनरलाइजेशन रे वेरिफिकेशन ना जनरलाइजेशन के हाँ वेरिफिकेशन रे जावे हाँ ठीक अच्छे आमर सरी जाइतिला कोन ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट रे हमें देखितिले ऑब्जर्वेशन फैक्ट को फर्दर केते भाग रे क्लासिफाइड हेतिला कोन कोन डेफिनेशन एनालिसिस एलिमिनेशन एटा हमें पढ़ाई देतिले देन आज हमें नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ इंडक्शन पढ़िबा फ्रेमिंग ए रिलेवेंट हाइपोथेसिस procedure of induction कौन थिला एथिरे फर्स्ट होची ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स सेकेंड रे कौन थिला फ्रेमिंग है रिलेवेंट hypothesis तीन रे जनरलाइजेशन चार रे वेरिफिकेशन तो हमें सेकेंड पॉइंट आज पढ़ा फास्ट रे हमर ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट रे पुणी तीन प्रकार थिला थ्री टाइप्स कोन कोन डेफिनेशन एनालिसिस एलिमिनेशन पढ़ देथिले आज हमें सेकेंड टा पढ़बा फ्रेमिंग ए रिलेवेंट हाइपोथेसिस तो एथि डेफिनेशन लिखो तन बुझे थ्योरी तो the second step of inductive procedure the second step of inductive procedure is the framing of relevant hypothesis. Second step of inductive procedure is the framing a relevant hypothesis. Second step of inductive procedure is framing a relevant hypothesis. Hypothesis is a
देखो हाइपोथेसिस इज ए टिके मते कहि बोला लिखि सारले सरले कि नाही मो जानि पारनी न hypothesis is a provisional supposition made for an hypothesis is a provisional supposition made for an unknown cause of an effect or event. Unknown cause of an effect or event. Full stop. The supposition guides us. The supposition guides us to make further observation or investigation. Observation or investigation. दिया दिया टिके पानी पूरा लाइट हो कौन लिखिला कहलो हाँ if we frame a hypothesis concerning the cause of an event or phenomena and by some means we find that the hypothesis is wrong. Then we discard DIS with wrong comma then we discard the hypothesis in favor of another hypothesis. For example, if we frame the hypothesis, example लिख दे कि लिखिबो कोन we frame the hypothesis then unhealthy habit is the cause of malaria. Unhealthy habit healthy habit is the cause of malaria. एग्जाम्पल नहीं होला देखो and prove it is to be wrong then hypothesis is rejected. ये कौन लिख लो is rejected है ना हाँ rejected on the rejection of one hypothesis we have to frame another hypothesis.
another hypothesis to discovery the unknown cause. To discovery unknown cause. Fuel. Sorry. Fuel. Fuel. Fuel attach much important to this step. Fuel attach much important to this step, and consider that major part of induction is over. Induction is over after framing a relevant hypothesis. After framing a relevant hypothesis. लिखिले समझते एबे देख सुन से कोन कहउचंती सेकंड स्टेप होची कोन इंडक्टिव प्रोसीजर रे सेकंड स्टेप कोन फ्रेमिंग ए रिलेवेंट हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस माने होची कोन ना प्रोविजनल सपोजिशन हैला कहा परे मेड फॉर एन अननोन कॉज ऑफ एन इवेंट. तमे जति गोटे ऑब्जेक्ट रो बा गोटे घटना रो कारण जानि ना तमे सेठी कोन करिवो ना हाइपोथेसिस करिवो बा अज्यूमशन करिवो ए कारण रो घटना एटा हेई पारे बोली सेटा कोन कहै जाय ना हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस माने होची कोन बुझियला हाइपोथेसिस माने प्रोविजनल सपोजिशन कोन फॉर अननोन कॉज ऑफ एन इफेक्ट और इवेंट. गोटे घटना रो धर गोटे घटना रो कोन अछि कारण तुमको जाना नै तमे सेठी कोन करिवो हाइपोथेसिस करिवो माने हाइपोथेसिस माने अज्यूमशन करिवो ए घटना ए कारण पे ए घटना हेतबो ताको कहै छै कोन हाइपोथेसिस. दिस सपोजिशन गाइड्स मेक्स टू फर्दर ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन. से जो तमे अज्यूमशन नेलो से अज्यूमशन ता हमको कोथरे सहायता करिवो ना फर्दर ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन करिबा पई कोटा से घटना ऊपर बुझला बुझ परछ कि नाही बुझ. तापरे कोच इफ वी फ्रेम हाइपोथेसिस कंसर्निंग द कॉज or event phenomena by some means find hypothesis wrong. तमे जति कोन करूछ से हाइपोथेसिस नेलो कॉज ऑफ इवेंट रे बस घटना रे some means find किछि पॉइंट कोन तिला रॉन्ग हे गला सेति के बेले तमरा हाइपोथेसिस टे कोन हबो रिजेक्टेड हे जिवो डिस्कार्ड हाइपोथेसिस फेवर ऑफ अनदर हाइपोथेसिस. तमरा सेति के बेले कोन हबो से हाइपोथेसिस जति तुमको रॉन्ग पाई गलो से वर्तमान से हाइपोथेसिस टे डिस्कार्ड हे जिवो पुनी आउ थरे हाइपोथेसिस करबो. धर एग्जांपल इफ वी फ्रेम हाइपोथेसिस कोनलो गोटे हाइपोथेसिस नेलो मलेरिया जरा पाई कोनलो अनहेल्दी हैबिट इज द कॉज ऑफ मलेरिया हला तमरो जो अनहेल्दी हैबिट तिला तार कारण पई कोन हेची मलेरिया हेची हला मलेरिया तो कोडला हां इज प्रूव टू बी रॉन्ग जते बेले एटा कोन हबो रॉन्ग बोली प्रमाणित हे जिवो द हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड हला अनहेल्दी जति कोन हेतबो तमे प्रूव करलो एटा जति कोन तो रॉन्ग हेतबो ए हाइपोथेसिस रॉन्ग हे जिवो रिजेक्टेड. On the reject of one hypothesis, we have framed another hypothesis, discussed unknown cause. Suppose we frame hypothesis the bite of Anopheles mosquitoes. हमें ता कारण पुनी आउ गोटे hypothesis नेले जते बेले ए unhealthy habit ता कोन हला wrong हे गला सेते बेले हमें पुनी आउ गोटे hypothesis नेले कोन the bite of Anopheles mosquitoes is the cause of malaria. तो कोन हला and find the is this true हला से हाइपोथेसिस टा कोन अछि ट्रू अछि तमे जते बेले देखिलो कोन बाइट ऑफ एनोप्लेस मस्किटोस गोटे हाइपोथेसिस नेला सेटा ट्रू अछि सेते बेले कोन हला तम हाइपोथेसिस टा ट्रू हैला द हाइपोथेसिस सक्सेड डिस्कवरिंग द अननोन कॉज जो तमे कारण जाननतिलो सेते बेले जानिलो सक्सेस हे गला सेते बेले तम हाइपोथेसिस ठीक केला. तो ए हाइपोथेसिस को के देइतले फ्रेमिंग ए रिलेवेंट हाइपोथेसिस ना वेल देइतले से कोतले इंपोर्टेंट स्टेप ऑफ कंसीडर दैट मेजर पार्ट ऑफ इंडक्शन ओवर फ्रेमिंग ए रिलेवेंट हाइपोथेसिस हैला. हाइपोथेसिस होची इंडक्शन प्रोसीजर रो गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट बोली के कहले ना ओहेल. देन थर्ड पॉइंट जनरलाइजेशन के पानी पानी
हेला जनरलाइजेशन देखो देखिलो द करेक्टनेस ऑफ जनरलाइजेशन देखो ना देखो द करेक्टनेस ऑफ द फ्रेम्ड हाइपोथेसिस the correctness of the framed hypothesis enable us to put forth that since the hypothesis is able to provide satisfactory explanation of the fact under investigation. Investigation full stop. It will also explain all similar other instances of the fact under the given circumstance full stop. तापर लिखो we proceed from some particular cases of all similar cases. Cases of the fact. तब full stop देखिए लिखो the passage or jump from all to sum to all passage or jump sum to all from observed to unobserved and from known to unknown is called inductive leap. The process which assert something for all instances of a fact is called generalization. Generalization since as an important step without which there can be no advancement of knowledge. J Mill attached much importance to this step assert that induction is generalization. से जेएस मिल कहिचंती इंडक्शन इज ए कंप्लीटली विथ जनरलाइजेशन एला शॉर्ट क्वेश्चन आसी जिवो जति के कहिचे इंडक्शन इज कंप्लीट जनरलाइजेशन के जेएस मिल तो एटा मु बुझे दोछि सुनो आ वेरिफिकेशन बुझे दोछि त माने लिखि दबो हैना बैक कोनियो सुना से कोन कहउचंती जनरलाइजेशन माने कोन धरो गोटे करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस हैला आमे प्रथमे हाइपोथेसिस गोटे नेतिले कोन आमे अनुमान करितिले कोन मलेरिया होची घटना तार हाइपोथेसिस आमे अनुमान करी कोन नेतिले
अनहेल्दी खाइबा निहाती हेतिबो कोन अनहेल्दी हैबिट हेतिबो हाइपोथेसिस सॉरी मलेरिया रो कारण किंतु कोन हेतला ए हाइपोथेसिस टा भूल हे जायतला तापर हमें पुनी गोटे हाइपोथेसिस निकले जोटा कोन देखितले बाइट ऑफ माई एनोफ्लिस मस्किटोस इज कॉज ऑफ मलेरिया एटा ठीक थिला तो से कहउचंती गोटे करेक्टनेस हाइपोथेसिस माने हमर जो देखिले कि बाइट ऑफ एनोफ्लिस मस्किटोस एटा करेक्ट थिला हाइपोथेसिस पुट दैट since hypothesis able to provide satisfactory explanation ता पे गोटे satisfactory explanation थिला देखिले परीक्षा करी कि जानिथिले हला द फैक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन से जो बाइट ऑफ एनोफ्लिस मस्किटोस केमिति जानले सेटा ठीक बोली ना हमें इन्वेस्टिगेशन करिथिले से क्वेश्चन इट विल एक्सप्लेन सिमिलर अदर सर्कमस्टेंस फैक्ट under the given circumstance example kon देचंदी this process step we proceed from particular case रो कोठी गले all similar cases of fact माने आमे गोटे पर्टिकुलर केसेस कले हमको जो मशा का मरची गोटे केस रो से एरिया रे से केस रे हमें काम कले हला तापर कोचन इट इज द पासिंग जंप फ्रॉम सम टू ऑल हला ऑब्जर्व टू अनऑब्जर्व known to unknown एटा को कोन कह गला inductive leap म कहितले inductive leap कह जाय the process which asserts something for all instances fact is called generalization हमें जे किछि को नै के देखुछन सेटा को हमें कोन करूछन generalization करूछन माने sum to all को जोटा जाउछन सेटा हमें कोन कले generalization since important step without which there can no advancement of knowledge generalization परे और किछ अधिक नॉलेज नै जोटा हम कोन करबा एडवांस करि परिबा जेसमिल एतरे कोन इंपोर्टेंट स्टेप देइछन कोटा ना कोन थिला generalization रे जेसमिल कहछन एटा होची इंपोर्टेंट इंडक्टिव रे generalization for him induction is completely with generalization माने जेसमिल को हिसाब रे इंडक्शन होची कोन completely generalization then verification हला लास्ट स्टेप होची कोन वेरिफिकेशन से वेरिफिकेशन के देइचंदी जेवन से कोन कहछन वेरिफिकेशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ इंडक्शन हला इंडक्शन रे हम जो इंडक्शन प्रोसीजर पढितले लास्ट स्टेप कोन होची वेरिफिकेशन से कहछन दोस्त मेल हैज पुट फॉर्थ द प्रोसेस इंडक्शन एंड विथ जनरलाइजेशन देखो सबुतरे सब जिंस रिलेशन अछि हला हमें वेरिफिकेशन रे देखिबा कोन अछि जनरलाइजेशन रिलेशन अछि जनरलाइजेशन ने कोन अछि हाइपोथेसिस रिलेवंस अछि हाइपोथेसिस रे देखिले हमर ऑब्जर्वेशन फैक्ट घटना रहिले ही तार हाइपोथेसिस करबा हाइपोथेसिस रहिले ही से हाइपोथेसिस को हम जनरलाइजेशन कर जनरलाइजेशन थिले ही हमें से जनरलाइजेशन आचरे ठीक अछि कि भूल अछि हमें कहा तरह जानबा वेरिफिकेशन द्वारा जानबा बुझला एटे एम्ति मन रखिबो हला वेरिफिकेशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ इंडक्शन प्रोसीजर लास्ट स्टेप कोन वेरिफिकेशन those mill has put forth that the process of induction and with generalization hela mill जो प्रोसेस करथिले कोन सेटा करथिले जनरलाइजेशन सेटा देथिले yet for modern logician verification should follow the generalization hela modern logician कोन कले modern logician के जेबन कोन कले जोटा जनरलाइजेशन हेतला पुनी ताको कोन कले वेरिफिकेशन कले जेबन कंसीडर वेरिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप ऑफ इंडक्शन जेबन कहले इंडक्शन रो मोस्ट इंपोर्टेंट कोडा ना वेरिफिकेशन हला द जनरलाइजेशन एस्टैब्लिश इज द प्रीवियस स्टेप मस्ट बी वेरीफाइड जनरलाइजेशन जते बेले हे जिवो हला हमें ताको वेरीफाई करबा से जनरलाइजेशन ता ठीक अछि कि भूल अछि से कहचंदी से वेरिफिकेशन पुनी दुई प्रकार कोन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हला वेरिफिकेशन केते प्रकार रो दुई प्रकार कोन कोन गोटे डायरेक्टली वेरिफिकेशन गोटे इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन हला सुनो इट इज डायरेक्टली वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट तमे डायरेक्टली केमिति वेरीफाइड करबा कहा तोरा हला वेरिफिकेशन थिला वेरिफिकेशन रो हमें कोन कले मेल जो जनरलाइजेशन देथिले सेही स्टेप को वेरिफिकेशन कले कि मॉडल लॉजिशियन जेवन से कहले वेरिफिकेशन हो टू टाइप्स कोन हो गोटे होची डायरेक्ट हां आ गोटे इनडायरेक्ट डायरेक्ट वेरिफिकेशन पुनी कोन कहले का द्वारा डायरेक्ट वेरिफिकेशन हे जबो ऑब्जर्वेशन करबो एक्सपेरिमेंट करबो हला एटा को कोन कहले डायरेक्ट वेरिफिकेशन फॉर एग्जांपल हला जनरल प्रपोजिशन गोटे नेबा तो पूछो किछ नै फॉर एग्जांपल जनरलाइजेशन कोन हबो कहलो all cases of malaria
एडे लिखि दियो एग्जांपल ड्यू टू द bite of Anopheles mosquitoes. देख आम देखिले कौन बहुत सारा केसेस नेले सब केस एटा एग्जांपल दियो किंतु वेरिफिकेशन एग्जांपल दियो हला वेरिफिकेशन दुई प्रकार रे लिखिबो टिके टिके लिखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देन लिखिबो एग्जांपल ऑल केसेस ऑफ मलेरिया ड्यू टू बाइट ऑफ एनोफिलिस मस्किटोस आमे गोटे जनरल घटना नेले जोटे देखले सब केस रे कोन अछि कोन कामुडिची ना माय एनोफिलिस मस्किटो बाइट ऑफ एनोफिलिस मस्किटोस कामुडिची सेति पय कोन आइची मलेरिया आइची एटा कहा द्वारा जानले आमे ना ऑब्जर्वेशन आउ एक्सपेरिमेंट द्वारा हला डायरेक्टली कोन कहले वेरीफाई द एक्चुअली ऑब्जर्विंग मलेरिया पेशेंट इनवेरिएबल वाइट इन एनोफिलिस मस्किटोस टू टेक अनदर एग्जांपल हला हमें डायरेक्टली कोन देखिले ना देखिले जे सब लोकन को कोन आइची जो लोकन को मलेरिया आइची से लोकन को कोन आइची मशा कामडुची एटा को बड़ी हमें वेरीफाई कले ना डायरेक्टली वेरीफाई कले कहा द्वारा ना ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट द्वारा देन पुणे आउतर गोटे एग्जांपल ले छन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली वेरीफाइड ऑब्जर्विंग बॉडीज फीलिंग डाउन टू अर्थ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमें डायरेक्टली वेरीफाई करि परिबा कोन हम बॉडी केमिति फॉलिंग डाउन होउची कोन अर्थ माने पृथ्वी रे हला द जनरेशन ऑन अदर हैंड इनडायरेक्टली वेरीफाइड इनडायरेक्टली एटा तिले कोन तम डायरेक्टली वेरीफाई इनडायरेक्टली केमिति वेरीफाई आइदर बाय डिडक्शन और accumulation of fact indirectly केमिति वेरीफाई करिवो डिडक्शन द्वारा बा accumulation of fact हला से कुछ इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन बाय डिडक्शन लाइक डिड्यूसिंग सर्टेन कंक्लूजन तमे जो डिडक्शन बाहर करबो सेत्र कोन होची गोटे सर्टेन कंक्लूजन नबो फ्रॉम द जनरल प्रोपोजिशन and the subject them verification direct appeal to fact of experience केमिति तमे कोथरे अप्लाई करबो ना fact of experience रे डायरेक्टली अप्लाई करबो फॉर एग्जांपल the generalization all atoms have electronic and proton हला एटा तमे डायरेक्टली करबो गोटे एटम नेला से एटम रे कोन थिबो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन थिबो इनडायरेक्टली वेरीफाई कोन रदरफोर्ड कोन अल्फा रॉय secret experiment further the indirect verification accumulate of fact lies the correct revealing fact then putting together such a verified proof generation for example life is possible in Mars hela for example life is possible in Mars eta kono directly verify na indirectly thank you hame life actually रे possible होची कि Mars रे कि होनी हमें देखि नांती बा सुनु चंदे accumulation of fact obtained by various possible sorry proofs of Mars हला एटा एक्चुअली रे वेरीफाई होची कि नाही सेटा हमें केमिति जानिबा ना सुनि के जाने चंदी मंगल ग्रह रे मध्ये हमर लाइफ पॉसिबल हे परछ एटा इनडायरेक्टली जदी हमें देखु चंती कोन देखिले जे कोन हमें ग्रेविटेशन लॉ द्वारा देखले हम बॉडी अर्थ रे कोन होची अर्थ रे हां हाँ फॉल डाउन होची सेटा होची हम डायरेक्ट वेरिफिकेशन एटा तमरा वेरिफिकेशन थिला हला वेरिफिकेशन दुई प्रकार मन रखो गोटे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मशा को नै कि एग्जांपल दे परबा मलेरिया को नै कि एग्जांपल दे पर किबा साइंटिफिक वे रे मध्ये एग्जांपल दे पर हला डायरेक्ट वेरिफिकेशन को का को नै कि डायरेक्ट वेरिफिकेशन ऑब्जर्वेशन एंड इनडायरेक्ट डिडक्शन accumulation fact then problem of induction हला problem of induction रे एते किछ नाही सेथरे खाली जति खाली लेखिबो तार सॉल्व केमिति हला को वे रे सॉल्व हला हला प्रॉब्लम कोठो अराइज हेछि म कहि दउची हला प्रॉब्लम कोठो अराइज हेछि जत्ते बेले कोन हेछि हमें डिडक्शन रे ही एटा जेतो प्रॉब्लम ऑफ कोन अछि इंडक्शन हला इंडक्शन ने प्रॉब्लम अराइज हेछि इंडक्शन कोन कोए कहतरे सम टू ऑल known to unknown observed to unobserved हला एटा जते बडे कहउछन बा ए इंडक्टिव बिलीफ रे प्रॉब्लम आसे छै एक्चुअली रे कोन एटा सतरे होछि तो एई जो प्रॉब्लम को कोन हेचंती किछ जण सॉल्व करिवे कहा द्वारा सेटा में देखिबा से कहउछन देखो एटा पढी देबी हला तमे नोट्स बनेबो जति इतर इंपोर्टेंस पॉइंट किछ भी इतरे नाही हला देखो इंडक्शन एस्टैब्लिश कोन प्रॉब्लम ऑफ
प्रोब्लेम ऑफ इंडक्शन मत लागुनी एथर क्वेश्चन आसीबो बोले जदी भी आसीबो तमे तार प्रोब्लेम लिखिबो कोट प्रोब्लेम अराइज हैला हां प्रोब्लेम अराइज हैला इंडक्टिव लीप रू इंडक्टिव लीप द्वारा प्रोब्लेम पड़ले प्रोब्लेम रो सॉल्यूशन को माने देले सेटा होची इंपोर्टेंस हैला प्रोब्लेम ऑफ इंडक्शन प्रोब्लेम ऑफ इंडक्शन में शॉर्टली ही लिखियो गोटे गोटे लाइन प्रोब्लेम कोन देन सॉल्यूशन कोन आ किछ नै हला एडी कोन होची से जो सॉल्यूशन पाए डिफरेंट लॉजिशियन डिफरेंट पॉइंट दे चंती हला तो एटा लॉन्ग क्वेश्चन एसेंस लिख माने प्रॉब्लम हो जे एते की इंडक्टिव लीप रे प्रॉब्लम हैला ऑल टू नोन सम टू अननोन हैला तो एटी से प्रॉब्लम ए जो प्रॉब्लम हैला इंडक्शन रे ऑल टू नोन माने कोन होची सम टू ऑल नोन टू अननोन हैला ए जो प्रॉब्लम रे से बहुत सारा लॉजिशियन तांको पॉइंट दे चन टाइम अछि तो हाँ तो सॉरी जी है मुझे देखी दौचे मैंने शॉर्टली नोट्स मुझे कहीदेवी कौटा कौटा बन तुमको बन है से क्वेश्चन इंडक्शन एस्टैब्लिश द मटेरियल ट्रुथ ऑफ जनरल रियल प्रपोजिशन आम जानी इंडक्शन कौन करे एस्टैब्लिश करे जनरल रियल प्रपोजिशन कहा द्वारा ना मटेरियल ट्रुथ ऑफ जनरल रियल प्रपोजिशन ए पॉइंट मन रखिबे इंडक्शन कौन करे मटेरियल ट्रुथ ऑफ जनरल रियल प्रपोजिशन एस्टैब्लिश करे ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस कहा भीतर किछि पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को नहीं की in establish such a proposition gote proposition le there is a passage from sum to all observed to unobserved known to unknown hala the passage problematic there is lies nothing guarantee something all member instances for the observation only few member of instances observation se ko jani sum to all known to unknown एडी हमें जो known to unknown को कहले बस सॉरी sum to all को कहले हमें कोन all member को देखु चंदी की आमे कोन किछि पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को नै कि जनरलाइजेशन करूछन कोन ऑल इंस्टेंसेस बोले से को जन फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व ऑफ सम क्रो आर ब्लैक हमें ऑब्जर्व करले कोन सम क्रो आर ब्लैक सेटे वी अराइव एट जनरलाइजेशन कंक्लूजन कोन करूछंती ना ऑल क्रो आर ब्लैक हमें देखुछंती कोन सम को देखुछंती किंतु जनरलाइज कला बेले ऑल क्रो आर ब्लैक बट इट इज नॉट पॉसिबल किंतु एटा पॉसिबल नुए कारण कोन पार्ट ऑफ ऑब्जर्व ऑल क्रो मेक्स देयर कलर हमें किछि कुआ को ही देखि पारु छन हमें सब कुआ को देखि परिबे की देखि परिबानी दिस पॉइंट आउट दैट observation can one can only know the some crow are black can never know that all crow are black ला जने कोन करिवो किछि कुआ को देखि परिबा से किंतु कोन समस्त कुआ को देखि परिबा नाही further from the truth of some particular proposition one cannot derive the truth of corresponding general proposition जने particular proposition को देखि परिबा किंतु generalization proposition को देखि परिबा नाही hence the question arise as how by induction arrive a material truth of general proposition ताले क्वेश्चन arise होची ताले किपरि इंडक्शन material truth of general real proposition को एस्टैब्लिश करूची हला तो ऑब्जर्व सम पर्टिकुलर इंस्टेंस किछि पर्टिकुलर इंस्टेंस को ऑब्जर्व करके केमिति इंडक्शन हाउ टू इंडक्शन पॉसिबल बाय जनरलाइजेशन कंक्लूजन केमिति दोची हला तो इट इज हां दैट इज हाउ डज ए पास फ्रॉम सम टू ऑल known to unknown and observed to unobserved this is the problem of induction एटा थिला problem of induction कोन जदी हमें पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को देखि कि किभଳି हमें जनरलाइजेशन कंक्लूजन बाहर करूछन हमें तो किछि देखि चंदे ना ऑल क्रो और ब्लैक जो कहउछन हमें कहा माध्यम रे कहउछन ना सम क्रो को देखि कि हमें ऑल क्रो को कहउछन एटा केमिति पॉसिबल तो से कहले how material truth of general real proposition in induction is possible तो एटा थिला कोन इंडक्शन ना प्रॉब्लम अच्छा केते प्रॉब्लम बुझ पाइलो देन तार आसीबो सॉल्यूशन डिफरेंट लॉजिशियन माने डिफरेंट व्यू देई चंदी प्रथमे आसिले जेएस मिल हैला जेएस मिल कोन कहले स्टेट दिस प्रॉब्लम राइजिंग ए क्वेश्चन जेएस मिल आसी कि प्रथमे कोन कहले प्रॉब्लम कोटा बुझि पाइलो हमें प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन रे प्रथमे आसीबो इंडक्टिव लीफ रे ही प्रॉब्लम अराइज हेछि हैला हाउ टू सम टू ऑल केमिति प्रॉब्लम अराइज हैला ना एठी कहउचंदी हमें किछि इंस्टेंस देखि कि केमिति ताको ऑल इंस्टेंसेस कहि परिबा हला तो क्वेश्चन कोन अराइज हैला क्वेश्चन अराइज हाउ बाय इंडक्शन वन अराइव ए मटेरियल ट्रुथ ऑफ जनरल रियल प्रपोजिशन किपरि इंडक्शन टा मटेरियल ट्रुथ ऑफ जनरलाइजेशन प्रपोजिशन अराइव हैला
काई अराइज होला कारण कोन हमें कोन देखुछन केचे इंस्टेंसेस को देखुछन तो प्रथमे प्रॉब्लम एटा थिला तार प्रॉब्लम बुझी पले प्रॉब्लम क्लियर कोट प्रॉब्लम अराइज होला इंडक्शन रे देन तार सॉल्यूशन के देले दबा को जाके प्रथमे आसले जेएस मिल स्टेट दिस प्रॉब्लम by raising a question to why in some case one or two instances sufficient to generalization है तो से कौन कहले जेएस मिल स्टेट प्रॉब्लम by raising the question why है कहीं कि some cases one or two instances sufficient in generalization से क्वेश्चन कौन हो जाओ गोटे और देटा स्टेटमेंट को देखिए बट गोटे और देटा इंस्टेंसेस को देखिए कि हमें all instances कथा कहबा generalization करबा एटा कोन sufficient but in some case even 100 and 1000 of instances not sufficient to generalization हमें खाली गोटे देटा नुए जदि हमें 100 एवं 1000 टा instances देखुछ सेटा मध्ये sufficient नुए all instances को तो now the problem looks still more quite हला वर्तमान क्वेश्चन the logician have made various attempt arrive at some solution in problem हला एटा हमर जेएस मेल करो थिला कोन क्वेश्चन थिला बुझल कोन थिला से क्वेश्चन हमें कोन जदि हमें गोटे किबा देटा इंस्टेंसेस को नै कि नुए हमें 100 टा किबा 1000 टा इंस्टेंसेस को नै कि हमें जनरलाइजेशन करि परिबा नै तो वर्तमान कोन कहले किछि लॉजिशियन से तांकर प्रॉब्लम को सॉल्व करले कोन प्रथमे अरिस्टोटल आसीबे अरिस्टोटल किछि पॉइंट दे चंदी किंतु ए प्रॉब्लम सॉल्व किए करिवे मेल एंड वेन कोथिरे हमें देखिबा देखो अरिस्टोटल आसी किसी कोन कहले अरिस्टोटल को होचे डिडक्टिव मेथड से तांको डिडक्टिव मेथड हिसाब रे प्रूव करियो को ट्राई करले से कोन कहले देखो अरिस्टोटल अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय द हेल्प ऑफ इंडक्टिव सिलोजिज्म हला अरिस्टोटल कोथिरे प्रॉब्लम को सॉल्व करियो को ट्राई करले इंडक्टिव सिलोजिज्म रे से ट्राई करले कोन एग्जांपल ले दिस मे बी टाइगर लायंस बियर एक्सेट्रा आर फॉरेसियस टाइगर लायन बियर एक्सेट्रा आर वाइल्ड एनिमल हला कोन गोटे कहले टाइगर को नेले लायन को नेले बियर को नेले आ किछि पशु को नेले से क्वेश्चन एगुडा को कोन फॉरेसियस टाइगर लायन बियर एक्सेट्रा आर वाइल्ड एनिमल हला ऑल वाइल्ड एनिमल आर फॉरेसियस से जते बेले कहले हला एटा कोन गोटे इंडक्टिव सिलोजिज्म से कहा को नेले ना टाइगर लायन बियर एक्सेट्रा फॉरेसियस स्टेट वन of the premises but conclusion कौन इन्फॉर्म करचंदी all wild animal are foristious हला what is the ground of such information एटा कोत्र किछि इंफॉर्मेशन रो से कोठी की गले all को so Aristotle feels that all foristious animals are covered the world etc it actually cannot examine observe all the specific फॉरेसियस एनिमल से एक्चुअली रे सब एनिमल को देखि नांदी सब हिंस्र जंतु को से देखि नांदी हला एट हां only few animal are seen फॉरेसियस in the above inductive syllogism ये inductive syllogism माध्यम रे जो अरिस्टोटल ए प्रॉब्लम को सॉल्व करबा को चाहिले से किंतु केतले इंस्टेंसेस को नै छन inductive syllogism माने जेमेति कि हमें इट इज सम रो ऑल कथा कहउछन से मते से इंडक्टिव सिलोजिज्म बुझला इंडक्शन जा सिलोजिज्म होची कोन से प्रोसेस सिलोजिज्म माने त्रिपति जुक्ति हला तीनटा प्रेमिस के बजौतरे सेटा को सिलोजिज्म हला तीनटा प्रेमिस माने डेटा प्रेमिस गोटे कंक्लूजन बस सेटा को कोन कहै छै सिलोजिज्म और इंडक्टिव कोन जोटा सम टू ऑल हमें कहउछन इंडक्शन हाँ से कौन कहले few animal forces this being so problem occurring passes from sum to all in the induction remain unsolved जते बेले सही प्रॉब्लम आसिला हला से मध्ये से sum to all कहले तो प्रॉब्लम कोन हला सॉल्व हला नाही हला पुणे आसिले कि द सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन मिल एंड वेन तापर के आसिले मिल और वेन हला मिल और वेन होचे इंपोर्टेंस हमर इंडक्शन प्रॉब्लम को के सॉल्व करिवे मिल और वेन हला तो कौन कहले मिल एंड बेन हैव पुट फोर्थ से कौन नै कि फुट कले लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी नेचर एटा लिख लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी नेचर यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल कॉजेशन
as the formal ground of induction. Formal grounds of induction. जेस मिल कौन नेले प्रथम ने लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी नेचर लॉ ऑफ कॉजेशन ए देटा होची को ग्राउंड रो ना फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन तो ना ताकू नै कि प्रूव करले तो लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी नेचर माने कौन लिखो द लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी नेचर स्टेट दैट law of uniformity nature state that nature behaves ए पॉइंट मन रख तो लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी नेचर आसला माने ए पॉइंट कहबो नेचर बिहेव्स सिमिलर अंडर सिमिलर कंडीशन द लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी नेचर स्टेट दैट नेचर बिहेव्स सिमिलर अंडर सिमिलर कंडीशन it may also be stated as the event in nature repeats themselves without any deviation under similar condition तापर लॉ ऑफ कॉजेशन माने एतिकी लिखिबो द लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी नेचर स्टेटेड दैट नेचर बिहेव सिमिलर अंडर सिमिलर कंडीशन है तापर लॉ ऑफ कॉजेशन लिखो लॉ ऑफ कॉजेशन स्टेट दैट एवरी इवेंट इन दिस वर्ल्ड हैज कॉज every event in this world has cause there is nothing in this world that is without cause मेल जो डेटा पॉइंट कथा कहले कोन कोन लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी नेचर लॉ ऑफ कॉजेशन हला एटा को ग्राउंड ऑफ इंडक्शन ना फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी नेचर कोन कहू छी नेचर बिहेव्स सिमिलर अंडर सिमिलर कंडीशन एटा के कहला लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी नेचर लॉ ऑफ कॉजेशन कोन कहला ए वर्ल्ड रे एमिति किछि कारण नाही जार किछि कार्य नाही जार किछि कारण नाही हला एवरी इवेंट मस्ट हैव ए कॉज से क्वेश्चन ए वर्ल्ड रे एमिति किछि कार्य नाही जार कारण नाही मुंडो हिंदिलानी हला से कोन कहू द कॉज मे बी आइदर एक्सीडेंटल और एसेंशियल से कॉस्ट से कारणटा को बडे आइतिबो आइदर एक्सीडेंटल आइतिबो ना एसेंशियल आइतिबो एक्सीडेंटल कोन वेरी करिबो पर्सन टू पर्सन एसेंशियल माने निहाती दरकार जेमे मनीष पाखरे एसेंशियल क्वालिटी कोन अछि रैशनल एनिमल एटा सब मनीष पाखरे थिबो कि नाही आ तर एक्सीडेंटल क्वालिटी कोन इमोशन कलर भी है परिबो कि हाइट रे हला के शॉर्ट के लॉन्ग हला एसेंशियल बा किछि क्वालिटी कोन हेतबा एसेंशियल नले एक्सीडेंटल रिलेटेड इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉज एक्सीडेंटल एसेंशियल एक्सपेक्टली इफ वी सर्च फॉर द कॉज ऑफ डेथ हला देख आमे कोन गोटे कारण नेले कारण कोन कॉज ऑफ डेथ रो कारण आमे खोजबो वी फाइंड लाइफ इज एसेंशियल कॉज ऑफ डेथ हला लाइफ कोन अछि जीवन अछि बोली मरण होउची एसेंशियल कॉज खोजिले द डिजीज लाइक जॉन्डिस मलेरिया एक्सेट्रा आर एक्सीडेंटल कॉज गोटे ह्यूमन बीइंग रे ए जो जॉन्डिस बा मलेरिया बा एगोटे सब कोन एक्सीडेंटल कॉज एसेंशियल कोन जीवन अछि माने मरण होउची इन दिस कॉज causal relation is established by essential quality one or two instances sufficient for generalization एक रे कोन कहू one or two instances नै कि हमें generalization करूछन जन्म अछि माने मृत्यु अछि फॉर एग्जांपल ऑल मेन आर मोर्टल सेठी हमें कोन कहउछंती ऑल मेन आर मोर्टल हमें सब मनुष्य को देखिछंती कि कोन देखिछंती किछि मनुष्य देखिछन बट इन द केस causal relation established by accidental quality ए केस रे कोन होछि causal relation ता केतेबेले establish होछि ना accidental quality even 100 and 1000 instances not sufficient for generalization example all men are honest hela all men are honest thus Mill find answer the question raised by him Mill and Ben carefully Mill and Ben that by relying both law of uniformity nature and law of universal causation one can validly make a passage from sum to all hela se law of uniformity nature और law of causation द्वारा से क्वेश्चन जणे कोन हेतबो sum to all चाइ परिबो
ହେଲା କେମିତି ଦେଖ but this law advance the solution of problem ए दिटा law ହେଲା कौन law law of universal uniformity nature law of causation ए दिटा law हमर जो problem थिला कोटे inductive leap रे से कौन कले problem रे solve कले हैला solution the problem of induction do not find universal acceptance this is because following reason कौन देखो firstly the it is number firstly the alternative principle method etc have been advanced logicians solve the problem प्रथमे कौन कले advance कहले होची कौन गोटे कंडीशन माने सिमिलर कंडीशन आउ सिमिलर अंडर सिमिलर कंडीशन माने जन्म अछि माने हमें तारी ऊपर कंडीशन सब नै कि काम करबा आ कहउछ एवरी इवेंट मस्ट हैव कॉज जेतो घटना अछि माने तार कारण मध्य थिबा हला एक दिटा को नै कि सब सेकेंडली दिस लॉ आर नॉट सर्टन एज दे merely strong belief cannot conclusive provide सेकेंडली conclude एटा मध्य सर्टन नो एटा किंतु कोन स्ट्रांगली thirdly both these law themselves establish induction हला से डेटा को लॉ कोन करू से निजे निजे इंडक्शन को एस्टैब्लिश करू छन एंड आर टेकन ग्राउंड ऑफ इंडक्शन व्हिच पैराडॉक्स से जे तो निजे निजे इंडक्शन दोचन से इंडक्शन को कोन कह जाय पैराडॉक्स बोली को आ जाय हला से जो निजर निज जण करो मिल और वेन जो थ्योरी देचन से थ्योरी को से कोन कहजन एटा होचे पैराडॉक्स ऑफ इंडक्शन से लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी नेचर लॉ ऑफ कॉजेशन को कोन कहले पैराडॉक्स ऑफ induction thus the solution to the problem induction by relying the law of uniformity nature law of universal causation suggest by mill and vein not without problem of its ए जो प्रॉब्लम टा कहा द्वारा हेची ए देटा लॉ द्वारा ए हेची किंतु प्रॉब्लम निजर नुहे माने ए जो सम टू ऑल से प्रॉब्लम नुहे बोली से कहले हला से ए देटा लॉ अछि बोली प्रॉब्लम अराइज हेची देन से देटा लॉ द्वारा हमर जो इंडक्टिव लीप रो प्रॉब्लम सॉल्व कला से कोन सिमिलर कोन होतला सिमिलर सर्कमस्टेंस कोन थला सेटा लॉ ऑफ कॉजेशन रे लॉ ऑफ कॉजेशन कोन कहूची नेचर बिहेव सिमिलर अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंस नेचर रो एटा क्रिएट हेची से घटना रो से कंडीशन ही बाहरिबा आ सब घटना रे किछ ना किछ कारण अछि जेहेतु हमें गोटे कुआ को देखिले बस एठी हमें कंक्लूजन सॉरी सम क्रो को देखिले हमें सेही हिसाब रे कहले जे ऑल क्रो और ब्लैक हमें कुआ को ही कहले आ का को कहले हला तो ए डेटा थिला तांकर प्रॉब्लम कोठी अराइज हला प्रॉब्लम केमिति सॉल्व हेला बुझिला प्रॉब्लम कोठी अराइज हला इंडक्टिव लीप रे इंडक्टिव लीप कहि परबे इंडक्टिव लीप रे सॉल्व कहा किए कला और कहा द्वारा कला लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी नेचर कोन लॉ ऑफ कॉजेशन कोन कहबो हला लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी नेचर कोन से कोटे हां नेचर बिहेव्स सिमिलर अंडर सिमिलर कंडीशन हला लॉ ऑफ कॉजेशन कोन एवरी इवेंट मस्ट हैव सब घटना किछ ना किछ कारण अछि से जो लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी नेचर लॉ ऑफ कॉजेशन से माने ऑलरेडी law of uniformity nature and law of causation already well established एटा already prove हे जाय छै जेमिति कोन law of uniformity nature को जानते गोटे कंडीशन माने गोटे घटना रो माने गोटे सिमिलर घटना नेबा हला से कोन सिमिलर इवेंट कोनला सॉरी ना the event sorry the law of uniformity nature behave similar under similar condition हला गोटे सेही घटना हेतबो सेही घटना रो किछ कार्य गण नबा जेमेति कि हमें थर वाटर हला वाटर कोन हबो सब बेले निम्नवती हला हमें कोन से वाटर ऊपर ही करबा माने वाटर टी जलटा को देखिबा सेटा निम्नगति होची कि नै तारी ऊपर ही कंडीशन किछ नै कि हमें काम करबा नाही कि अलका किछ फायर से गुडा नै जो माने हमें जानि छन गोटे मंजी रो कोन होची गछ होची हमें से मंजी ऊपर ही देखिबा अलका किछ सैंड माटी फाटी गुडा किछ देखिबा हला से मंजी ऊपर ही हमें काम करबो से मंजी रो ही गछ आसीबो हला से नेचर कोन कहूची से घटना रो से कंडीशन ही न आ सब घटना रे किछ कारण अछि एटा तो बुझी होची हला एटा थिला तमरो कोन बुझी हला ना हां प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन प्रोसीजर ऑफ इंडक्शन बुझिला देन आउ अछि कोन तमरो रिलेशन बिटवीन डिडक्शन एंड इंडक्शन एटा तमे जानि छ जानि ना डिडक्शन एंड इंडक्शन हो डेफिनेशन तार सिमिलरिटी कोन हां से गुडा को सब पॉइंट गोटे काम करबो एटा लिखि आनिबो हला रिलेशन बिटवीन डिडक्शन एंड इंडक्शन हला एटा लिखि दबो किछि भी नाही किंतु लास्ट रे जोटा अछि द समरी एटा मस्ट लिखिबो समरी ए पांचटा बार लिखि आनिबो म नेक्स्ट क्लास रे बुझाई देबे हला नोट्स टाकिले बहुत टाइम जाउची हां
हाँ एटे लिखी दबो देन एगुडा सब पढ़ी दबो है एगुडा को बनेइबनी पढ़ी दबो ए पॉइंट पांचटा जक बनेइबो आ डिडक्शन इंडक्शन रे कोन करबो रिलेशन बिटवीन डिडक्शन एंड इंडक्शन बने देतबो नोट्स मो खाली आसे के बुझेई दे बुझला देन हमें तापरे पढ़िबा काइंड्स ऑफ इंडक्शन नेचर ऑफ इंडक्शन रे बुझिएला बुझी होची प्रोसीजर ऑफ इंडक्शन प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन बुझिएला किछ डाउट्स हम पढ़ी के सब दिन ऐसी क्वेश्चन पचारे छ नुए एक्चुअली मैम अपन आउटरे स्टार्ट करे आउटरे स्टार्टिंग सब कहले